स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे और वहां उन्होंने यूएन में सुधार से लेकर चीन और साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध पर बातचीत की। उस पर भारत का पक्ष सामने रखा, जहां यूएन में सुधार के लिए उन्होंने पेशकश की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार मुश्किल कार्य है, लेकिन इसे किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी दुनिया के तमाम देशों को आगाह किया कि अगर बिना देर किए सुधारों को अमली जामा नहीं पहनाया गया तो ये विश्व निकाय अप्रासंगिक बन जाएगा। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये तमाम बातें जो हैं वो लोवी इंस्टीट्यूट में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के बढ़ते संबंधों का महत्व और हित जो दोनों देश सुरक्षा केंद्रित कोड में साझा करते हैं के विषय पर अपने संबोधन के बाद एक सवाल के जवाब में कही। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में एस जयशंकर ने ये साफ तौर पर कहा कि यूएन में सुधार मुश्किल काम है, लेकिन इसे जरूर किया जा सकता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की महासभा में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का पक्ष रखा था, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि भारत यूएन में स्थायी सदस्यता चाहता है। तमाम जो देश थे, अमेरिका, इसके अलावा दुनिया के तमाम देश भारत के पक्ष में भी नजर आए, लेकिन वहीं चीन कहीं ना कहीं जिस तरह से विरोध कर रहा है, चीन कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार अड़ंगा भारत की रफ्तार में बन रहा है, उसको लेकर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से तमाम बातें कही गई। I would like to place this relationship in the larger context of global politics. I think in an immediate sense, we are grappling with what I would call a 3C challenge, which is COVID, conflict, and climate change. I think these are the three big issues which have disrupted world politics, disrupted the world economy. And in many ways, I think they frame the larger context in which India and Australia discuss world politics. But preceding those, or certainly preceding the Ukraine conflict and the COVID, are the longer-term changes which have been unfolding really over multiple decades. Changes which perhaps had one big inflection point in the global financial crisis of 2008. The fact that we are looking at a much broader distribution of power and influence in the world. That conversations and decisions are no longer as narrow as they used to be. I would say the global rebalancing in many ways is a even bigger picture in which we need to look at the relationship. So for me, whether it's the accumulated bilateral relationship or the geopolitical changes or the big global issues of the day, I think all of this in a way has been distilled into the emergence or the re-emergence of the Quad. I would argue that one of the reasons why the Quad worked in 2017 and subsequently, as opposed to the first attempt at it in 2007, a decade earlier, was the fact that India's relationship, bilateral relationships with the other three Quad partners had developed sufficiently by 2017 for us to actually take this initiative forward in a manner in which perhaps we couldn't do a decade earlier. And in that, if you look at it chronologically, and I've had the privilege of being associated with all these relationships, I would say the India-US had changed in the most dramatic and
perhaps in the most profound manner. विदेश मंत्री ने ये कहा कि ऐसे महाद्वीप हैं जो वास्तव में ये महसूस करते हैं कि सुरक्षा परिषद की प्रक्रिया उनकी समस्याओं पर संज्ञान नहीं लेती। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि ये भाव जो है ये संयुक्त राष्ट्र को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इस समय का एक अहम घटनाक्रम ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वीकार किया है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार जरूरी है। ये छोटी घटना नहीं है, लेकिन हमें इसकी जरूरत है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इतने सालों से इन सुधारों को क्यों बाधित किया गया है। Change tack and ask you about China, if I may. As you know well, for 2 years Beijing had Canberra in the diplomatic deep freeze, and since the new Australian government took office in May, lines of communication have been reopening in different ways. It did seem to me that communications were never interrupted to quite the same degree between Beijing and Delhi, even in your most difficult periods when there were bloody clashes between your two militaries. Can you give us, I know you're very diplomatic, but can you, given that Australia is going through a transition period in our relationship with China, what would be your advice to Australia about how you re-establish a stable, productive relationship with a country that is so different from our own? You know, I am, especially after I became foreign minister, I'm very careful about giving advice. I'm even more careful about giving advice publicly. What I can share with you is that we've had 2.5 very difficult years in our relationship with China, which has included the first bloodshed we've had on the border after 40 years. And where we actually lost 20 soldiers. But our endeavor, my endeavor has been to keep the communication lines going. In fact, the morning after that, I called up my counterpart Wang Yi and urged him to ensure that there are no escalatory moves or complicating moves on the Chinese side. For me, diplomacy is about communication. It's not just in relationship to China, even in relationship to your earlier set of comments about Ukraine. If diplomats do not communicate with each other, then what kind of diplomacy do they do? So I really feel, shutting down talking, burning bridges, and I say this as a general principle. I would not, recommend it to anybody. There can be very testing times. I mean, we have another neighbor with whom we have a very difficult relationship. But at the end of the day, countries have to deal with each other, and you have to find some way of keeping that going. एस जयशंकर ने आगाह करते हुए ये कहा कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये ऐसा कुछ है जिसे करना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन ये ऐसा कुछ है जिसे करना होगा, वरना साफ गोई से कहूं तो इसकी परिणति संयुक्त राष्ट्र की बढ़ती प्रासंगिकता होगी। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। आपको ये बताते हैं कि भारत उन देशों में से है जो संयुक्त राष्ट्र में लंबे समय से लंबित सुधारों को लागू करने की मांग कर रहा है, और साथ ही साथ भारत लगातार ये कह रहा है कि वो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का हकदार है। उन्हें दरअसल यूएन में स्थायी सदस्यता दी जाए, और मौजूदा समय में यूएन में 5 स्थायी सदस्य हैं और बाकी 10 जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं, और अस्थायी सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा 2 सालों के लिए करता है। वहीं 5 जो स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हैं, जिनके पास किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने का अधिकार है। हाल ही में जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की महासभा हुई तो उसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तमाम देशों ने ये कहा कि भारत को स्थायी सदस्य जो है यूएन में बनाया जाए, लेकिन वहीं चीन लगातार कहीं न कहीं अड़ंगा डाल रहा है, और यही वजह है कि एस जयशंकर
ने न सिर्फ यूएन में सुधार की पेशकश की बल्कि साथ ही चीन को लेकर भी जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने जमकर चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवादियों को बचाने के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। एस जयशंकर ने चीन द्वारा जैश ए मोहम्मद के आतंकी साजिद मीर को काली लिस्ट में डाले जाने की राह में रोड़ा अटकाने पर परोक्ष रूप से तंज कसते हुए ये कहा कि यह बहुत ही खेदजनक है कि जब कभी दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने की बात आती है तो कुछ देश उन्हें बचाने का काम करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, You referred to reformed multilateralism and you acknowledged that reform of the Security Council was at the core of that, but that's a really hard nut to crack. How, in fact, do you think India can advance its purposeful agenda for reformed multilateralism? And I ask you this against the background of your strong commitment to diplomacy and paying more attention to diplomacy, but also as a former ambassador to the UN and committed multilateralist. I think if India can help to lead the way on this, then it would be a very good thing in the current circumstances globally. Mm-hmm. Well, I agree with you that it's a hard nut, but hard nuts can be cracked. If I look back and say, well, this one is too difficult, I wouldn't be doing too much in my life. I mean, life has been a set of challenges, particularly for a country like India. So I would not let the difficulties of that challenge deter me or discourage me. In fact, I'd put it the other way around. Ask yourself, put India aside for a moment. Look, there are whole continents today which actually feel that the Security Council processes do not take into account their interests. I spoke earlier about Ukraine and a sense in the global south that their problems of food and fuel and fertilizer are being just brushed aside. And frankly, if you go to a UN General Assembly and talk to countries, there are countries in Africa and Latin America and the small island states, quite apart from Asia and India, who feel very, very strongly that this is not their UN in a way. And I think that's hugely damaging to the UN. So one of the developments this time, in fact, has been a very explicit recognition by President Biden of the need to actually reform the UN, which is not a small development. But we need to because we all know why reform has been blocked for so many years. So I think it's important to keep up the pressure. There is global sentiment out there. We completely understand. This is not something which is going to be done easily and necessarily speedily. But it's something which has to be done finally. तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ लगातार भारत के संबंध बढ़ रहे हैं और इस तरह से महत्व और सुरक्षा केंद्रित क्वाड के सदस्य के रूप में दोनों देशों के हितों पर लोवी इंस्टीट्यूट में जो उनका संबोधन था उसमें उन्होंने ये कहा कि पिछले कुछ सालों से चीन ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। उन्होंने गलवान घाटी में संघर्ष का भी जिक्र किया और कहा कि हमने वहां अपने 20 सैनिकों को खो दिया और पिछले 2.5 साल चीन के साथ बेहद कठिन रहे हैं और इसमें 40 साल बाद सीमा पर हुआ पहला रक्तपात यानी गलवान घाटी का संघर्ष भी शामिल है। साथ ही विदेश मंत्री ने ये कहा कि उन्होंने बीजिंग के साथ संवाद माध्यम को खुला रखा क्योंकि पड़ोसियों का एक दूसरे से बात
करनी पड़ती है, ये एस जयशंकर की ओर से कहा गया। आपको ये बता दें कि साल 2009 से 2013 तक चीन में भारत के राजदूत रहे एस जयशंकर ने ये कहा कि लेकिन मेरा प्रयास संवाद माध्यम को चालू रखने का रहा है। वास्तव में उसके बाद की सुबह मैंने अपने समकक्ष वांग ये को फोन किया और उनसे ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि चीनी पक्ष की ओर से कोई तनाव भड़काने वाला या जटिलता पैदा करने वाला काम नहीं किया जाए। तो किस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और भारत के बीच जो कहीं न कहीं गलवान घाटी के संघर्ष के बाद तनाव बढ़ गया था, उसे कम करने का काम किया। उन्होंने कहा कि चीन पड़ोसी है और पड़ोसी से बात करनी पड़ती है। विदेश मंत्री ने इस तरह से अपना पक्ष जो है वो चीन को लेकर रखा, लेकिन इसी के साथ साथ आतंकवादियों को बचाने पर चीन और पाकिस्तान को एक बार फिर से फटकार लगाई। इतना ही नहीं, जिस तरह से लगातार रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, जिस तरह से मिसाइलें दागी जा रही हैं, उस पर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के किसी भी कोने में बुनियादी ढांचे को लक्षित करना और नागरिकों को हताहत करना ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। भारत शुरुआत से ही ये कह रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो हालात बने हैं वो बातचीत के जरिए उसका समाधान निकाला जा सकता है, शांति कायम की जा सकती है, लेकिन ये बातचीत से ही संभव होगा। युद्ध इस पूरी समस्या का समाधान नहीं है और बार बार भारत की तरफ से ये दोहराया गया है और कहा गया है कि इस संघर्ष से किसी को फायदा नहीं हो रहा है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये संघर्ष दुनिया के एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि ये लोगों के रोजमर्रा के जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। देश मंत्री ने कहा, A few days ago, President Vladimir Zelensky was on this very stage, albeit by video link. Let me begin by asking, what have you made as an observer of individuals and politics and diplomats and leaders? What have you made of his wartime leadership over the past 8 months, I guess starting with that critical first weekend after the invasion when he knocked back an offer of safe passage out of Ukraine with that memorable phrase, I don't need a ride, I need ammunition. What have you made of Zelensky as a president? You know, in any situation, you're partly shaped by your impressions which are inherited or which pre-exist. And the only time I've seen him up close was actually at Glasgow on the sidelines of the COP26 when he and Prime Minister Modi had a very interesting discussion about a range of issues, including business cooperation, investments, trade. What could Ukraine do to build up its relationship with India, because it wasn't really as substantive as it could be. That was my first impression. I must also confess I've really not focused that much on the individual leaderships of different countries in that part of the world, even though I'm very familiar with that part of the world, largely because we've never had a crisis, or we've never had the stakes out there to be that intensively engaged. Having said that, I think a lot of what are the perceptions of the world have been shaped by obviously the events which have happened. For us, from an Indian perspective, our particular challenge was that we had 20,000 students in Ukraine. They were caught in the middle of the conflict. Most of them studied in eastern Ukraine. And extricating them required not just diplomacy in the normal sense, but actually having Prime Minister Modi call up Zelensky, call up Putin, engage me talking to Kuleba and to Lavrov and at various other levels. So I think there's a kind of a cumulative picture out here, and certainly our expectation would be that he is somebody
we will continue to be engaged with. In fact, Prime Minister Modi spoke to him last week. In what we believe is the need to return to the path of diplomacy and dialogue, because we honestly don't think this conflict is helping anybody at all. कि विवाद को सुलझाने के लिए कूटनीतिक और बातचीत के रास्ते पर रूस और यूक्रेन को लौटना होगा, यानी बार बार भारत की ओर से यही दोहराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर तमाम मुद्दों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस कार्यक्रम में बात की, तमाम सवालों का जवाब दिया, फिर चाहे वो संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की पेशकश हो, इसके अलावा चीन को लताड़ लगाने की बात हो, जिस तरह से आतंकवादियों को बचाया गया, इतना ही नहीं, एक बार फिर ये कहा है कि अगर यूएन में सुधार नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये संयुक्त राष्ट्र के लिए ही मुश्किलें खड़ी करेगा। और साथ ही साथ रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच किस तरह से पूरे मामले का समाधान हो सकता है, इसको लेकर भी भारत ने अपना पक्ष रखा है। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ने जो F-16 फाइटर जेट के मेंटेनेंस के लिए जो पैसा, जो फंड पाकिस्तान को दिया है, एक बार फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसको लेकर अमेरिका की आलोचना की है। जिस तरह से वो तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो भारत का पक्ष रख रहे हैं, यही वजह है कि लगातार एस जयशंकर जो हैं विदेश मंत्री भारत के, वो दुनिया भर में तारीफ बटोर रहे हैं। और इसी कड़ी में जो अमेरिकी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने एस जयशंकर की तारीफ की है। भारतीय विदेश मंत्री की तारीफ करते हुए ये कहा है कि जयशंकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राजनयिकों में से एक हैं और मेरी राय में वह भारत के अब तक के सबसे अच्छे विदेश मंत्रियों में से एक हैं। ये व्यक्ति डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर अपनी कुशल कूटनीति, कठिन बातचीत रणनीति के लिए जाने जाते हैं। ये अमेरिकी विशेषज्ञ का बयान सामने आया है। वो अपने काम को अंदर से जानता है। वो बहुत साहसी व्यक्ति है और हमने उनके कई भाषणों और वाद विवादों में देखा है जो पश्चिमी मीडिया द्वारा लिए गए थे। उन्होंने भारत की स्थिति को वास्तव में अच्छी तरह से रखा और रणनीतिक स्वायत्तता की अपनी नीति पर अडिग रहे। यानी दुनिया भर में अब विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो तारीफ बटोर रहे हैं। अमेरिका से लेकर दुनिया के तमाम बड़े देश के जो विशेषज्ञ हैं, जो मंत्री हैं, वो भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने यूएन में भारत का पक्ष रखा और साथ ही साथ पाकिस्तान और चीन जैसे देश जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उन्हें जिस तरह से मदद दुनिया के दूसरे देश पहुंचा रहे हैं, उसको लेकर भी उन्होंने अमेरिका जैसे देश को भी लताड़ लगाई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।